ओके सो लास्ट लेक्चर में हमने जो लास्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट किया था वो कंटिन्यू करेंगे. जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन एंड सी द क्वेश्चन. जस्ट रीड इट केयरफुली. वैसे हमने कल उसका एक छोटा पार्ट किया था. देखो, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम. ठीक है, तो मास ऑफ द बॉल इज गिवन टू बी 100, मतलब m is equal to 0.1 kilogram दिया हुआ है. एंड ड्रॉप फ्रॉम द 5 मीटर. तो समझो ये बॉल है और यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस से उसको हमने ड्रॉप किया. तो हाइट h is given to be 5 meter in this case. Okay, and it bounces repeatedly, and during every bounce 64% of potential energy is converted into the kinetic energy. So यहाँ पे 64% ये जो दिया हुआ है, तो kinetic energy after the bounce is always equal to 64% of the potential energy before the bounce. Yes, calculate the following coefficient of restitution. Let us try to do it first. Okay. Yes. इसके ऊपर हमने एक फॉर्मूला भी तैयार किया था, अगर आपको याद है लास्ट इसमें. तो अगर इसको हमने h नॉट बोल दिया तो यहाँ पे जो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एक्चुअली इधर का काइनेटिक एनर्जी बनता है. ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी k नॉट. एंड आफ्टर द बाउंस, फर्स्ट बाउंस, द काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज ke1. ओके, ke1. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द बाउंस, मतलब वो एक्चुअली ke1 है और it is equal to 64% of potential energy before the bounce, and whatever potential energy is there before the bounce will become the kinetic energy before the bounce because of the energy conservation. क्योंकि जैसे ही यहाँ से ड्रॉप करेंगे तो जब यहाँ पे वो आएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसलिए इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द बाउंस इज 64% of k naught before the bounce, k not, right? तो ऐसा भी लिख सकते हैं. बट अभी सबसे पहले हमको क्या करना है, देखो कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी, इधर का वेलोसिटी हमको ढूंढ के निकालना है. ठीक है, जो कि v नॉट उसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, जो बिफोर द बाउंस का वेलोसिटी जो है वो है v नॉट, which is responsible for this kinetic energy before the bounce, that is k naught. And velocity after the bounce is going to be v1, which is responsible for this kinetic energy after the bounce, that is k1. तो अभी इसमें सबसे पहले हम करेंगे using the energy conservation. तो kinetic energy is equal to potential energy, and both of these are just before the bounce, and hence you can say kinetic energy is half m v naught square is equal to mg h naught. mm cancel, and we are left with v naught square is equal to 2g h naught, and hence v naught becomes actually the root of 2 into g, where g 10 and h naught is already 5. So वो अगर हमने डाल दिया तो 10 into 10 becomes 100, 100 का square root 10. So 10 meter per second, this is going to be the velocity before the bounce. Okay, and now we have to use this statement that the kinetic energy after the bounce is equal to the 64% of k naught. Yes, before the bounce, and then we can say half of m v1 square must be actually equal to ये cancel 16 by 25 आ जाएगा. So this is yes 25 times 25 into mg h naught, half of m yes square of m v naught square. So half m will get cancelled from both sides, and we will left with v1 square v naught square is 10 5 into v naught square, and if you just take the square on both sides, then we get this v1 simply equal to 4 by 5 into 10, and v naught is already 10, so we can say v1 is going to be 8 10 मतलब 8, that's all, 8 meter per second. Yes, so v1 is obtained to be 8 and v naught is already obtained to be 10. So using this v1 and v naught, we will be able to find out the coefficient of restitution now.
So what is the formula for coefficient of restitution? Negative ratio of relative velocity after the collision upon relative velocity before the collision. So For the collision. ये जो ग्राउंड है, तो ग्राउंड का जो वेलोसिटी है उसको हम बोल सकते हैं u0 और u1, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर वाला। तो अभी इसमें तो इस केस में हमको इन दोनों का मतलब इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ढूंढ के निकालना है। लेकिन एक्चुअली क्या है ना कि ये ग्राउंड का जो वेलोसिटी है वो तो जीरो ही है ना, बिफोर भी और आफ्टर भी। ग्राउंड इज नॉट मूविंग एट ऑल, सो दैट्स व्हाई द रिलेटिव वेलोसिटी विल बी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल इटसेल्फ, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से इनिशियल वेलोसिटी यहां पे जब लिखेंगे तो E = v2 - v1, फॉर्मूला हमारे पास यही है कि v2 - v1 अपॉन u2 - u1, ये फॉर्मूला है। लेकिन इसमें v2 मतलब क्या होता है, ये जो v0 v1 है ये यहाँ पे v2 का कम करने वाला है और वो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पे v1 यहाँ पे आ 8 जाएगा - 10. v1 इज 0। जिसके साथ वो कोलाइड होता है वो दूसरा बॉडी, तो उसका वेलोसिटी एक्चुअली 0 है, ठीक है। फिर यहाँ पे u2 जो है, u2 मतलब बॉल का इनिशियल वेलोसिटी बिफोर कोलिजन वाला वेलोसिटी, जिसको v0 बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये v0 से रिप्लेस होगा और माइनस यहाँ पे, और वो भी नेगेटिव है यार, भूलो मत, तो ये -v0 है। और u1 जो है वो एक्चुअली फिर से ग्राउंड का वेलोसिटी जो कि फिर से 0 ही लेने वाला है, तो ये हमको इस तरह से करना है। तो अगर हम ये करेंगे तो हमको मिलेगा E = minus minus will get cancelled and we get is v1 upon v0 as the final, which will be actually v1, which is already 8 and 8 upon 10. 10. So 8 by 10 comes out to be 4 by 5. Okay, 0.8. Yes, this is going to be actually the coefficient of restitution in this situation. Yes, and अगर चाहिए तो हम हाँ ठीक है, नहीं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रिलेशनशिप दिया हुआ है, इसलिए हमको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अभी और क्या चाहिए हमको, द स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर द थर्ड बाउंस। ओके, यस, स्पीड ऑफ द बॉडी आफ्टर थर्ड बाउंस। ओके, उसके लिए हमने जो डिस्कशन किया था रेगुलर सेक्शन में इस टॉपिक के ऊपर, तो उसमें आपको याद होगा कि वंस द बॉल जस्ट बाउंस फ्रॉम द फर्स्ट बाउंस, तो उसके बाद का जो उसका वेलोसिटी है वो कितना मिलता है, पता है, v1 happens to be actually e times of v0, मतलब v0 into e, and the velocity after the second bounce, सपोज ये ऊपर जाके यहाँ पे फिर से बाउंस होता है, तो इसके यहाँ पे फिर से बाउंस होने के बाद जो उसका वेलोसिटी बनेगा उसको बोलेंगे v2, so that v2 will actually be again e into v1 itself, and yes sir, v3 is equal to e into v2. Correct. So every time the velocity will just go on getting multiplied by e, that is e is the coefficient of distribution, because ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं v1 is equal to e into v0, that means the velocity after the bounce is just e times of the velocity before the bounce, and e is a constant, and hence Yes sir, constant. So every collision, during every collision the same thing will happen. So during the first collision the velocity after the first bounce becomes equal to e times of the velocity before the first bounce. In the second, after the second collision, it will happen that the velocity after the second bounce is equal to the e times of velocity before the second bounce, and after the third bounce v3 is equal to e into v2. into v2, correct. And now if we just go on putting these values of v1 here and v2 here successively, then we can just be able to say that here v2 can be written as actually e into v1, but v1 is already this e into v0, तो ये हमको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हमको मिलता है v2 is equal to e square into v0, or at the same time if we just put this value of v2 here, then we can Yes. get this v3 as e into v2, which is already e square into v0, and Yes sir, v3 can be written as e cube into v0. And even इससे भी आगे जाके in general we can just prove that the velocity after nth bounce is always equal to e raised to n times of v raised to v0, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया है, ठीक है, और इसका भी लॉजिक वही है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डायरेक्टली v3 is equal to e cube into v0,
and everything is already known here. So e cube का मतलब होता है इस 8/10 या 0.8 का क्यूब, या हम उसको 4/5 ले सकते हैं आराम से, that is better. So Yes, 4/5. and उसका क्यूब, and here it is v naught. V naught is already there. 10. So this is 10 put here, and then we can be able to solve this further. So 4 का क्यूब जो कि 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 125. as it is. We can just reduce this by 5. 5 twos are and 5 25s are. Yeah. And then V3 can be written as 64 into 2 is 128, that is divided by 25. If you just want to calculate this in decimals, then just multiply divide by 4. Yeah. So that it becomes 100 here in the denominator, and there will be 128 into 4. मतलब कितना हो गया वो? 8 4s are 32, 3 carry, 8 2s are 4 2s are 8 plus 3 11, 1 carry and 5. So it is 512 divided by 100, which can be 5.12 meter per second as a final answer. So this is the velocity after third bounce. We can just expect here. तो देखो 10 पहले फर्स्ट बाउंस के पहले 10 वेलोसिटी था, फर्स्ट बाउंस के बाद कितना हो गया? 8 हो गया, फिर सेकंड बाउंस के बाद कितना होगा वो निकाल सकते हैं। उस 8 को भी 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना? 4/5 into 8 कितना बनता है वो? 4 8 32, 32/5 मतलब 6.4 बनेगा, 6.4. And after the third bounce its velocity will become 5.12 here in this case. तो ये हमको सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। देखो, let us check the third one. Impulse given by the ball to the ground during this bounce. Okay, तो इस बाउंस के दौरान, मतलब थर्ड बाउंस है, थर्ड बाउंस के दौरान कितना इंपल्स दिया गया वो हमको टेक करना है, और उसके लिए टाइम भी दे रखा है। देखो टाइम इज ऑलरेडी गिवन टू बी 250 मिलीसेकंड्स। चेक करो कल हमने किया था, ठीक है? सो इंपल्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंपल्स? Force into time. लेकिन फोर्स पता नहीं है, so we'll have to use the change in momentum वाला फॉर्मूला। Yes sir, change. Impulse is equal to change in momentum. One मतलब डेल्टा p मतलब p3 minus p1 सॉरी p2, ओके, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, देखो यहाँ पे जब वो थर्ड बाउंस परफॉर्म करेगा तो थर्ड बाउंस के पहले कितना वेलोसिटी उसका होगा, और थर्ड बाउंस के बाद उसका कितना वेलोसिटी होगा, तो वो उसका हमको डिफरेंस निकालना है। मास तो चलो कांस्टेंट ही रहने वाला है, तो मास इनटू वेलोसिटी 3 minus mass into velocity 2, so m can be taken out and v3 minus v2 can be left in the bracket. But the question here is that how will you find out this v2? v3 तो ऑलरेडी हमको पता है, तो अभी देखो v3 जैसे हमने निकाला तो वैसे V2 है ना सर, E into V1. yes, so v2 is going to be e square into v0, so we can just say that, but v2 में तो ये v2 पहले निकाल देते तो अच्छा रहता था। Let us do that, क्योंकि नहीं तो चेंज इन मोमेंटम हमको नहीं मिलेगा। v2 is going to be e square into v0, where e is again 4/5, and if we multiply it by 10, then we can be able to get this 4/5 a square 3/25 into 10, so it is, इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 5 2s are 5 5s are मतलब 32/5, that means v2 is obtained to be into 2 into 2 6.4. 6.4 मीटर पर सेकंड। अभी हमने निकाला भी था ऑलरेडी, ठीक है? Yes sir. ये बन गया हमारा वेलोसिटी बिफोर द थर्ड बाउंस, दिस इज द वेलोसिटी बिफोर द थर्ड बाउंस, एंड हेंस द इंपल्स, ठीक है, इंपल्स ड्यूरिंग द थर्ड बाउंस will actually be same as the change MV3. Yes sir, M into V3 minus V2. अभी वो करना है mv3 minus m, yeah, V2 taken common directly, and v3 minus v2 directly there in the bracket. So m is already 0.1, yes, into V3 is 5.12 5.12 minus 6.4. but we are going to
make a mistake in the direction, check here v2 जो है v2 यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है करके वो नेगेटिव लिया जाएगा और v3 लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर के डायरेक्शन में है, पॉजिटिव ले आ जाएगा, पॉजिटिव, and hence you have to make it minus. Minus of minus will become plus actually. प्लस. So finally वो हमको मिलेगा 0.1 into what is the addition of these two? 11.52, correct है? 11.52. Yes sir. And then we can just shift one digit, decimal point one digit back, and we get this 1.152. And the unit is as usual kilogram meter per meter second. Yes. So this is going to be actually the impulse, okay, in this situation. Okay, and we also want to find out the average force exerted by the ground on the ball. और इसके लिए फिर टाइम दे रखा है. Yes, आंसर भी करेक्ट है हमारा. ठीक है, अभी एवरेज फोर्स जो है वो हमको निकालना है और इट्स गिवन दैट इंपैक्ट लास्ट्स फॉर 250 मिलीसेकंड्स. ओके, तो लेकिन अभी ये दिखाई देगा क्या आपको? यस, ठीक है. तो देखो, फोर्स इंपल्स इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स. यस, फोर्स इनटू टाइम. टाइम. तो अगर ये बात यूज करेंगे तो हम लिख सकते हैं J is equal to F into T here. Yes sir. F is to be found out, so F will actually be equal to J upon T. T. Already we have found out J 1.152. 1.152. 1.152, and that is to be divided by this 250 milliseconds. So it is going to be 250 into 10 raised to minus 3. So it will become actually 0.250 होगा. 0.25 बन जाएगा डायरेक्ट. ठीक है, तो अगर इसको हमको राउंड अप करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 4 एंड डिवाइड आल्सो बाय 4. तो न्यूमरेटर दोनों को अगर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 25 4 100 एंड डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करके वो 1 आ जाएगा नीचे. तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, तो इसलिए ये 4 8 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 0 and 2 carry, 4 plus 2 6 and 4 as it is. 4.608. Yes, 4.608 Newton. This is actually going to be the average Newton resulted. Yes. So this is the answer of the next question. And also we want to find out the pressure where contact area is given. Yes, here. Average pressure exerted by the ball on the ground during this impact if contact area of the ball is 0.5 centimeter square. Don't forget here that this contact area is given in centimeter square. You have to convert it into meter square. Yes. Area अगर दिया हुआ है 0.5 centimeter square, तो जैसा कि हम जानते हैं 1 centimeter is always equal to 10 raised to minus 2 meter. So यहाँ पे सेंटीमीटर के बदले क्या आएगा? 10 raised to minus 2 meter आएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 0.5 10 raised to minus 4 होगा. Correct. So this is 0.5 into 10 raised to minus 4 and it will be meter square then. So ये हो गया area. But if you want to find out the pressure, then you have to divide the force by area. So force is 4.608. 608, that is to be divided by 0.5 into 10 raised to minus 4. So that सर वो ऊपर जाएगा तो 10 raised to 4 हो जाएगा. हाँ हाँ, तो 4.608 into 10 raised to 4 तो हो गया और नीचे आ रहा है 0.5 सिंपली. बट ये 0.5 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 हो जाएगा. वो 1 हो जाएगा और वो लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी. तो 8 2 जा 16, 1 carry, 1 as it is, 2 6 जा 12, 1 carry again, 4 2 जा 5.216 into 10 raised to 4. अरे 9 point. Yes sir. 9.216 into 10 raised to 4. But this 10 raised to 4 will make this decimal point to shift 4 digits at the right side, and hence it will become 92,160 Pascal. Okay. Yes sir. Convert it into kilopascal as 92.16 kilopascal.
K Pascal. Okay, so this is going to be the pressure. Again, one of the most interesting sum. Just take the screenshot of this first and have the word if you have any doubt of this. No doubt, sir. Yes. Let us see this next question. 12th one. The spring ball of mass 0.5 kilogram is dropped from some height. Okay, so 0.5 kilogram का mass वाला एक ball है. T is equal to 10 seconds. It is dropped from some height. Okay, on falling freely for 10 seconds. Okay, तो देखो, suppose यहाँ से वो drop किया जाता है और 10 सेकेंड ट्रेवल करने के बाद, ठीक है, falling from for 10 seconds, it explodes into two fragments of mass ratio 1:2. Okay, तो इसका मतलब इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, एक है उसका टुकड़ा और दूसरा, और दोनों का जो मास रेशियो है वो 1:2 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमने मान लिया कि m gets split up into two parts, one of which is m1 and m2, then m1 is to m2 is given to be 1/2, ये already दिया हुआ है, ठीक है। The lighter fragment continues to travel downwards with the speed of 60 meter per second. So obviously m1 will be the lighter one because उसका जो mass ratio 1 है, तो 1 का correspond करने वाला जो ये है वो lighter होगा. So this m1 actually just continues to move downwards with a speed of 60 meter per second. Okay, so देखो m1 is already moving in the downward direction with a speed of 60 meter per second. उसको बोलेंगे v1. Okay, and the okay, calculate the kinetic energy supplied during the explosion. Yes, तो सिर्फ इतना ही दिया हुआ है हमको कि the lighter one just moves with the speed of 60 meter per second after the collision or explosion, and you have to find out the kinetic energy supplied during the explosion. तो जो explosion हुआ उसके अंदर कितना kinetic energy बाहर आया या प्रोड्यूस हुआ वो हमको ढूंढ के निकालना है, ठीक है। Just read the question carefully and just hold it in mind. Yes, sir. Give me some seconds. Okay, Yes. ठीक है। तो अभी देखो, what is the kinetic energy supplied during the collision, तो ये निकालना, इसका मतलब कि हमको क्या करना होगा उसके लिए, इधर का जो एक्सप्लोजन से पहले का जो kinetic energy है वो पहले ढूंढ के निकालना होगा, उसको हम बोल देंगे चाहिए तो KI, ओके, या KI बोल देंगे उसको, KI means the kinetic energy before the collision. ठीक है ना पता? हाँ सर, दिख रहा है. ठीक है, तो kinetic energy before the explosion is going to be KI, and KF means the kinetic energy after the explosion. After the explosion. And how will you get the kinetic energy supplied during the explosion? तो उसके लिए हमको the kinetic energy supplied due to explosion will be actually, अब देखो इसका अगर ऐसा हो रहा है कि if suppose kinetic energy is supplied due to explosion, that means the before kinetic energy must be less and the kinetic energy after the explosion must be greater, and the difference between these two will actually be the kinetic energy supplied due to the explosion. That means indirectly you have to find out this KF minus KI. ये तो समझ सकते हो ठीक से? You have to find out the kinetic energy due to explosion means KF minus KI is to be found out. Here KF stands for the total kinetic energy of both of these two parts.
m1 and m2 which are moving with velocity suppose v1 and v2. अभी m2 कौन से डायरेक्शन में मूव हो रहा है वो हमको पता नहीं, कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है वो भी हमको पता नहीं, बट जो भी उस वेलोसिटी से वो मूव हो रहा होगा और जितना भी उसका मास होगा तो उसके हिसाब से उसका कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी जरूर होगा, तो वो हमको यहाँ पे kf के अंदर इंक्लूड करना है। तो kf के अंदर क्या आएगा देखो, इट विल बी हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। So this is going to be actually kf, where ki is nothing but the kinetic energy before the explosion। अभी जब एक्सप्लोजन हुआ ही नहीं है तो m1 m2 पैदा ही नहीं हुए, तो उस केस में जो उसका मास है वो तो इंटैक्ट था जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है वो m था, और उस समय जो जिस स्पीड से वो मूव हो रहा होगा तो उसको हम मान लो क्या बोलेंगे v बोल देंगे, ठीक है, सिंपली v we can call it as, and then we can just be able to find out this kinetic energy before explosion to be simply half of m v square, that's all। अभी यहाँ पे देखो चेक करो क्या क्या चीजें दी है और क्या क्या चीजें मिसिंग है। देखो m1 पता नहीं, m2 पता नहीं, v1 ऑलरेडी पता है, v2 पता नहीं, v पता नहीं, तो इतने सारे चीजें हमको ढूंढ के निकालनी। अच्छा सबसे पहले एक बात यहाँ पे नोट करो कि m1 और m2 का रेशियो 1:2 है, लेकिन m1 m2 जो है निकले किधर से है, इसमें से ही निकले हुए कि नहीं, m में से ही, तो इसलिए m1 plus m2 must be 0.5, तो m1 plus m2 equal to 0.5 और m1 upon m2 equal to 1/2। ये बात यूज करके हम m1 और m2 आराम से निकाल सकते हैं साइमल्टेनियसली उसको सॉल्व करके, ठीक है, बट दैट इज आल्सो नॉट नेसेसरी एक्चुअली। अगर आपको याद है तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अगर मान लो कि किसी भी नंबर को, मान लो एक नंबर समझो x है और उसको अगर सपोज हमको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है जिनका रेशियो सपोज n:n है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बताया था कि फर्स्ट वाला जो रेशियो है वो हमको मिलता है m/n + n into x डायरेक्टली, और सेकंड वाला जो पार्ट है वो हमको मिलता है सिंपली n/n + n into x, दैट्स इट। तो अगर ये बात हम यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0.5 is getting divided into two parts whose ratio is 1:2. The first part will automatically becomes 1/1 + 2 into 0.5. And the second part will actually become 2/1 + 2 into 0.5. मतलब एक पार्ट बनेगा 1/3 of 0.5 और दूसरा पार्ट हमको मिलेगा 2/3 of 0.5, जिसको हम लिख सकते हैं m1 और m2। You can just say that this m1 is going to be 0.5/3, or you can say simply m/3 if you want to express it in terms of m only, so we can just say that it will be m/3, and m2 here will be actually expressed as 2/3 times of m, that's it। समझा लिख से, तो एक हो गया हमारा m/3 और दूसरा 2m/3, that's it। तो ये दो पार्ट्स हमको मिल रहे हैं। अच्छा अगर ये भी तुमको नहीं समझा तो हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं उसको, देखो ये जो है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको मिलेगा m2 is equal to 2 times of m1, right? But already we have that this m1 plus m2 is going to be m, which is 0.5, so we can just say that here m1 m1 के बदले हम वैसे रखेंगे उसको और m2 के बदले 2m1 डाल देंगे, जिससे हमको मिलेगा 0.5, जिससे हमको मिलेगा 3m1 is equal to m, means m1 is going to be m/3, and if you just put this value of m1 here in this formula m2, so m2 can be written as 2 times of m/3। so इस तरह से देखो m1 भी मिल गया और m2 भी मिल गया in terms of m, जो कि आपको इधर भी वही मिला था, ठीक है। now once you get these two masses, now we just try to find out the velocity just before the collision। how can we find out that velocity before the collision? इधर का वेलोसिटी आपको दिया नहीं है, कैसे निकालेंगे? सिर्फ इतना ही दिया है कि इस बॉल को हमने ड्रॉप किया, मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड इट गेट्स एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट फॉल्स डाउन फॉर 10 सेकंड्स हियर। 10 सेकंड के बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, कैसे ढूंढ के निकालेंगे? You can find it out by using the first kinematical equation because time is already given, okay? So using the first kinematic equation, V is equal to U plus 80. V is equal to U plus 80. So we get this V equal to U is already 0 because it is dropped from rest.
A means gravity, acceleration of gravity, which is 10. But don't forget to take it minus, so it will be minus 10. And time is already 10 seconds. Okay. So V is actually going to be minus 100 meter per second. And minus sign means that it's moving downwards. Okay. Downward. तो ये तो हमको पता चल गया, वेलोसिटी उसका मिल गया। जो हमको यहाँ पे रखना है, तो ये काम हमारा हो गया। You can just highlight it so that you can just use it later. Okay. चलो ठीक है, ये हमको मिल गया। Now the question here is, देखो M1 M2 ऑलरेडी मिल चुका है in terms of M, और M पता है, मतलब वो यूनिट मिला हुआ है। तो M1 M2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, V1 का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो V1 is going to be 60. Just don't forget that it is again negative, just because it is moving in a downward direction here. So Yes, it is going to be minus 60. ये already दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, but V2 is not known. Can you tell me how can we find out V2? Sir, V1 plus V2 is equal to V. Why? No. किस क्वेश्चन में भाई? नहीं sir. Velocity से ऐड थोड़ी होते हैं। नहीं sir. We don't have any law like law of conservation of velocity. The velocity before collision is always equal to the velocities after collision. But definitely we have the law of conservation of momentum at least. है कि नहीं? तो Yes, sir. momentum के साथ, हाँ, momentum के साथ तुम जिसको बोला वो कर सकते हैं। Velocities के बारे में तो नहीं कर सकते, but momentum के साथ कर सकते हैं। Because we have the momentum, law of conservation of momentum already proved. So you can say according to the law of conservation of momentum, you can say the initial momentum before the collision, which can be called as pi, V is minus equal to pf. Okay, momentum before the collision is equal to momentum after the collision. अभी यहाँ पे momentum before collision की अगर बात करते हैं तो बॉडी एक ही था, कंबाइन था, तो इसलिए before collision वाला जो momentum है वो एक्चुअली एक ही बॉडी का मिलेगा, m into v, that's all. This is momentum before the collision, m into v, that's all. But what about the momentum after the collision? As soon as the body just gets split up into parts, there will be two terms in the momentum, one of which will be the momentum of the first body and second one will be the momentum of the second body. But again, you have to consider the directions of the momentum. The momentum which are directed downwards will be considered as negative. Automatically वो velocity की वजह से वो आने वाला ही है, साइन माइनस साइन, और जो मोमेंटम ऊपर के डायरेक्शन में रहेंगे वो पॉजिटिव कंसीडर किए जाएंगे। चलो ठीक है, सो एम भी तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। पीएफ के अंदर दो टर्म्स आने वाले हैं, जिसमें से एक टर्म रहेगा m1 into v1, which is the momentum of the first part of the body, m1 v1, उसमें भी v1 नेगेटिव है तो मोमेंटम विल आल्सो बी नेगेटिव, वो भी याद रखो। और एट द सेम टाइम हियर m2 v2 will be the second part, you can see, so it is going to be m2 v2। लेकिन अभी आपको पता नहीं है कि v2 जो है पॉजिटिव या नेगेटिव है, just by default keep it as positive and just try to solve this further। yes, तो यहाँ पे हमको ये v पता है, v1 पता है, v2 मिल जाएगा आराम से इस इक्वेशन को सॉल्व करके। Okay, so yes, m is already, just keep it as m only, because we have already expressed m1 and m2 in terms of m here. So m into v, v के बदले क्या आने वाला है, ये -100, this is -100 here, and that is equal to m1, which is m by 3, into v1, which is already -60 in this case, this is -60, and m2, which is 2m by 3, that is to be multiplied by v2, which is to be found out here. So let us cancel m from all these three terms and get this simplified as -100 is equal to m cancel हो गया, -60 by 3, मतलब 3 ones are 3 20s are, so it becomes -20 and plus here it is m तो cancel हो गया, simply 2 by 3 times of v2, that's it। Then we can just take this -20 this side here,
and get that minus 100 plus 20 is equal to 2 by 3 times of V2, and hence this is minus 80 is equal to 2 by 3 times of V2, which means V2 must be 3 by 2 times of 80, and it's also negative obviously. So it is actually going to be 2 ones are 2 40s are and 43s are 120. So it's going to be minus of 120 meter per second here. Yes. So V2 is also to be found out here by using the law of conservation of momentum. It doesn't make sense. Again, you have to understand what does this minus sign tells us. Downward. Yes. The second part is also moving in the downward direction, even faster than this first lighter part here. तो ये लाइटर पार्ट जो जिस स्पीड से मूव हो रहा है उससे भी ज्यादा स्पीड से मतलब डबल स्पीड से वो हेवियर पार्ट मूव हो रहा है. चलो ठीक है, तो ये हमको इसमें से मिल गया. देखो अभी v मिल गया, v2 भी मिल गया, m1 m2 तो ऑलरेडी मिला हुआ है, तो और क्या चाहिए? ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है. तो अभी हियर हां करके बताते हैं आपको. क्या क्या हम सॉल्व करके बताते हैं आपको. ओके 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 ठीक है, चलेगा. करो ठीक है, करो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ, टाइम वेस्ट भी करने का. हाफ ऑफ m1 के बदले हम पुट कर रहे हैं m by 3 v1 स्क्वायर. v1 के बदले हमने डाला minus 120. अभी माइनस हो या प्लस हो, स्क्वायर तो उसका पॉजिटिव आने वाला है. यस सर. तो ये 120 का स्क्वायर प्लस हाफ कॉमन ले ले तो अच्छा होता. ठीक है, टेक इट हाफ कॉमन and m2 means 2m by 3 into v2 square. अरे v1 sorry v1 is already minus 60, sorry, and v2 is minus 120. v square, v is minus 100, इसका स्क्वायर. अभी इसको सॉल्व करेंगे तो हाफ एज इट इज इधर m by 3 into 60 का स्क्वायर, तो एक्चुअली बनता है 3600. ओके, प्लस it is 2m by 3 again into 120 का स्क्वायर, जो कि 120 मतलब 12 का स्क्वायर बनता है 144 और ऊपर दो जीरो एक्स्ट्रा एज इट इज, एंड माइनस हाफ ऑफ. एक तो हाफ पूरा कॉमन लेके लेंगे क्या, बेटर होगा. पूरे इसमें से हाफ कॉमन ले लेंगे. ये हाफ गया बाद, सो अंदर में बचेगा इधर से थर्ड टर्म में m into 100 का स्क्वायर, मतलब वो बन गया 10 raised to 4, मतलब 10,000. बस ठीक है. Even we can take m common from all these terms, so it will be m by 2 here in the outside the bracket, and this 3 will cancel with this 3600, leaving behind 1200. So after taking m common, we'll just be left with 1200 only here in the bracket in the first term, plus m बाहर और ये 3 को कैंसिल आउट करो इसके साथ. तो देखो 3 1s are 3 4s are 12, 24 बचा, 3 6 3 8s are 24 और डबल 0, and this 4800 into 2 comes out to be 9600, and m तो हमने कॉमन ले लिया ऑलरेडी, माइनस यहाँ पे m कॉमन ले लिया, फिर बचेगा 10,000 बस. अब इसको सॉल्व करेंगे m upon 2 as it is into what is this
1200 plus 9600 108. हाँ 108 और ऊपर दो जीरोस एक्स्ट्रा माइनस 10,000. Okay, मतलब 10,800 minus 10,000 actually comes out to be simply 800, right? And m by 2 just as it is here. So 2 ones are 2 fours are and it becomes m into 400 मतलब 400 m. But m is already given 0.5. Now we put it here. So we get 400 into 0.5, which comes out to be 200, and that is going to be in joule. Okay, because we have used all the SI units. Okay, that's all. Just check. Yes, sir. Same answer. Okay. Yes. Just take the screenshot of this, and we move to the next question. The time is over. Okay. Marble of mass 2m traveling at 6 centimeter per second directly followed by another marble of mass m with the double speed. Okay. After collision, the heavier one travels with the average initial speed of the two. Calculate the coefficient of restitution. It's very easy. Just we have used the law of conservation of momentum and the definition of coefficient of restitution simply. So देखो, a marble of mass 2m. Suppose this is the marble of mass 2m, which is moving with the velocity 6 centimeter per second. So suppose this is moving with 6 centimeter per second. It is followed by another one of mass m only. ये दूसरा marble है m mass वाला. It is followed and it is moving with double speed. So what is the speed of this second marble? Double of 6. मतलब 12 meter per second, centimeter per second हो गया. ठीक है. When these two marbles just collide with each other, heavier one travels with the average initial speed of the two. Okay, मतलब देखो अभी heavier मतलब ये 2m वाला ना, तो ये जो 2m वाला जो है वो आफ्टर कोलिजन की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसका जो स्पीड है वो एवरेज ऑफ इनिशियल स्पीड ऑफ द टू, मतलब उसको हम लिखेंगे 12 plus 6 divided by 2. That's all. This is the average speed with which the heavier marble is moving with. We don't know the speed of lighter marble after the collision. Okay, see the diagram carefully. देखो इससे क्या क्या दिया हुआ है. First of all, this marble of 2m mass 2m moves with the speed 6 centimeter per second. We can just call it as u1. Okay, u1, and that is in positive direction, so it's positive. Okay, it is followed by another marble of mass m moving with double speed, so we can call it as u2, and that is also positive because both of these marbles are moving in the same direction because this m is following the another 2m here. Now the 2m mass वाला जो marble है वो एक्चुअली आफ्टर कोलिजन इन दोनों के एवरेज स्पीड के साथ, मतलब इन दोनों का जो इनिशियल एवरेज स्पीड है उसके एवरेज स्पीड के साथ वो मूव करने लग जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं v1. Okay, yes, and obviously it will be positive only here, but we don't know what about m1. ये जो पहला वाला मार्बल जो है m मास वाला, उसका जो स्पीड है आफ्टर कोलिजन वाला वो हमको पता नहीं कितना है. We can just assume it as v2. Okay, and we'll just try to find it out using the law of conservation of momentum. Okay, law of conservation of momentum. So according to the law of conservation of momentum, m1 into u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. This is statement for two bodies. तो यहाँ पे m1 मतलब क्या है, देखो 2m है,
तो 2m और u1 के बदले क्या आने वाला है 6 आने वाला है. This is 6 plus m2 is m and u2 is 12 which is equal to again m1 is 2m and v1 is going to be how much this comes out to be 9 right 9 meter per second centimeter per second. So this is 9 and m2 is again simply m and u2 is to be found out. So let us work this out. 12m plus 12m going to be 18m plus v2 into m. Cancelling out m from all these four terms, you can just be left with 12 plus 12, 24. That is equal to 18 plus v2 simply. And hence v2 is found out to be simply 24 minus 18. But v2 is going to be simply 6 centimeter per second. v2 will get okay. Then we can just be able to find out, and that is also positive. Okay, ये भी positive हमको मिला 6 centimeter per second. Yes. Now we can be able to find out the coefficient of distribution by using the formula minus of v2 minus v1 upon u2 minus u1. So coefficient of distribution will be v2, which is 6, minus v1, which is 9. v1, which is 9. Okay. u2, that is 6. Minus 12. minus 6. Minus 6, right? And we are left with minus of, here it is minus 3 divided by 6. That means it is going to be 1 by 2.5. 6, matlab 0.5, right? Which is the answer. Yes. Just take the screenshot of this and we'll just stop here. Thank you, sir. Okay. और एक लेक्चर लगेगा उसमें ये खत्म हो जाएगा चैप्टर. ठीक है. सो चलो ठीक है.